Assalamualaikum guys, we will proceed the general science topic regarding test preparations. So today we will study natural disasters. A sudden calamitous event that disrupts the functioning of a community or society will discuss human, economic, or environmental losses that exceed the community ability to cope up using its own resources is called a natural disaster. Natural disaster है calamitous event जो एक आफत ज़दा या तबाहकुन इवेंट होता है जो रुकावट डालता है वो फंक्शनिंग ऑफ कम्युनिटी एंड सोसाइटी कॉजेज जो इंसानों को भी ज़्यादा नुकसान दे इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल जो माहौल को भी ज़्यादा नुकसान दे दैट एक्सीड जो एक खास लिमिट से एक्सीड कर सके जो हम कॉमन रिसोर्स है उसको कंट्रोल ना कर पाए तो उसको नेचुरल डिजास्टर कहते हैं। अर्बन फायर जो है urban fire occur primarily in cities or towns with the potential to rapid spread to adjoining structure. ये जो है सिटी और टाउन में दोनों में आ जाता है और ये इसकी पोटेंशियल होती है कि ये इस तरह फैल सके और काफी जगह में नुकसान देता है बहुत इसकी जो कारण है वो एक्सीडेंट से भी आ सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी केमिकल मैकेनिकल रीजन अर्थक्वेक लाइटनिंग उससे भी ये आता है। Effects loss of life या हो सकती है loss of property economical loss ये दोनों ही prevention mitigation इसकी prevention कैसे की जाती है prevention of fire due to hazardous chemical ये है कि केमिकल से हम काफी प्रिवेंशन करें या फायर से उसको इस्तेमाल ना करें खास तौर पे इस्तेमाल करें सेफ्टी एट होम भी सेफ्टी का खास ख्याल रखें सेफ्टी एट वर्क प्लेस और वर्क प्लेस में भी सेफ्टी एंड मास गैदरिंग एट एन इवेंट्स में भी सेफ्टी का खास ख्याल रखें एजुकेशन प्रोग्राम में भी काफी ज्यादा सेफ्टी का ख्याल साइक्लोन मेट्रोलॉजी a cyclone is large air mass that rotates around a strong center of low atmospheric pressure. Cyclones are characterized by inward spiraling wind that create about a zone of low atmosphere. ये जो मेट्रोलॉजी है वो साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेजरमेंट ये है साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेजरमेंट है साइक्लोन जो है तो जो हवा एक जगह पे स्पाइरल मूवमेंट करेगा लो एटमॉस्फेयर ये रोटेट करे तो उसको हम साइक्लोन कहते हैं। फर्दर वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ साइक्लोन हम डिस्कस करेंगे उसमें पहले tropical cyclone are what most people are familiar with because they are cyclones that occur over tropical region ocean ट्रॉपिकल ओशन रीजन में आते हैं और ये हरिकेन एंड टाइफून आल्सो टाइप ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन बट दे हैव डिफरेंट उसके नाम जो है डिफरेंट होते हैं इट्स क्लियर व्हेन दैट स्टॉर्म इज अप ये जो है ये तूफान जब आए तो उसमें ये दो नाम हैं हरिकेन आर फाउंड एट अटलांटिक एंड नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक ये उस साइड पे आते हैं नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक साइड टाइफून आर फाउंड एट नॉर्थ west Pacific North Pacific typhoons are there. We can also describe tropical cyclone based on their wind speed. ये wind speed depend करता है and cyclone are also divided according to wind speed and damage they cause. ये जो है damage इसकी वजह से जो भी आता है उसकी वजह से ये distribute. Category number 1 wind speed between 90 and 125 km per hour. Some noticeable damage to house and tree. House or trees का damage होता है wind speed between 125 and 164 km per hour उसके दरमियान ये इसकी स्पीड होती है damage to houses and significant damage to crop and trees उसके crop और trees की खास damage होती है wind speed between 1,65,224 km per hour structural damage house to extensive damage to crops and uprooted trees, upturned vehicle and the destruction of buildings. उसका भी destruction of building भी हो जाता है इसमें vehicles कभी vehicle की भी उनको भी नुकसान पहुंचता है। Wind speed between 225 and 279 km per hour. Power failure and much damage to cities and villages. इसमें भी काफी नुकसान हो जाता है। Wind speed over 280 km per hour city 280 km से जब above और widespread damage इसमें भी ज़्यादा damage आ जाता है। polar cyclones जो है उसमें polar cyclone are cyclones that occur in polar region like Greenland, Siberia and Antarctica. उसके साइड साइबेरिया, ग्रीनलैंड उनकी साइड ये
polar cyclone. Unlike tropical cyclone, polar cyclone are usually stronger in winter के सीजन में ये आते हैं. As you can see that storm really to prefer the cold weather. ये cold weather को काफी prefer करते हैं. They also occur in area that are not very populated. जो populated area ना हो, so you any damage that do is very usually pretty minimal. और इसका जो है ये damage काफी कम है. Mesocyclone. Mesocyclone is when part of the thunderstorm cloud start to spin, which may eventually lead to tornado. ये जो है thunderstorm जो है cloud spin करते हैं जो lead tornado से बनता है. Usually middle and that can consider at the midpoint between one type of storm and the other. Tornado all come from thunderstorm cloud, but not all thunderstorm cloud make tornadoes. ये जो है thunderstorm and tornado जो है thunderstorm cloud से बनते हैं, लेकिन all जो सारे thunderstorm cloud होते हैं वो tornado नहीं बनाते. In order of tornado occur part of that cloud has to spin, and though you cannot really see this happening, this is the intermediate or meso step for regular cloud to dangerous spinning and cloud running along the ground. ये जो है running along the ground इसमें होता है. Effects of cyclone and hurricane. ये जो है तो क्या उसके effects होते हैं. Typical cyclone causes heavy rainfall and rainfall और landslide होता है इसमें. They cause a lot of harm to town and villages, causes severe damage to houses, coastal business like shipyard and oil well and are destroyed. They harm the ecosystem of the surrounding region. उसका भी जो है सराउंडिंग रीजन को काफी नुकसान हो जाए. Civic facility are disturbed. Agricultural land is severely affected, especially in terms of water supply and soil erosion. Soil erosion भी होती है. It causes harm to human, plant, animal life. इनको भी काफी नुकसान पहुंचता है. Communication system is badly affected due to cyclones. That was various communication system काफी. Structural mitigation of cyclones. Multi-purpose cyclone structures. Coastal belt plantation act as shields, reducing energy of cyclone. Is construct building properly inshore to the ground and avoid overhang of roof. Wind and water resistant building. Wind or water resistant building बनाते हैं. Install communication line underground. ये जो है cyclone से बचने की ये सारे तरीके हैं. Non-structural mitigation of cyclone. Hazard mapping, land use control, forecasting and warning. ये जो है community education, regular inspection of critical building. उसके critical जो inspection है regular building की, उसकी critical buildings की inspection.